क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हम बोलते हैं, उसके विरुद्ध आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजित किया है। हमारे थोड़े बहुत डिमांड्स हैं। There's a very interesting saying that while Manipur burned, the Neros were involved in the election in Karnataka. अभी तक कुछ आवाज आया ही नहीं अभी तक। तो इनको कुछ फर्क नहीं होता है कि इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, और ये जो षड्यंत्र है हमारे वक्ता तो बोलेंगे ही। दी पॉलिटिक्स जो अभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ये जो रवाया हुआ है इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस बोलते हैं इसको, जिसमें प्रैक्टिकली द स्टेट इज ऑल्सो कॉम्प्लिसिट in not basically taking care of the violence and killing of innocent people. आंकड़े हैं जो लोकल एरिया से आए हुए हैं। डेथ ऑफ 60 innocent people, ये और नंबर्स बढ़ते रहेंगे। 60 innocent people, injury to 230, displacement of 35,000 people, destruction of 1,700 houses, including burning of 100 churches. एक कॉन्फ्लिक्ट जो था बिटवीन टू ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स, ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एज ट्राइब्स with reservations in jobs, education and elected bodies, was allowed to turn anti-Christian violence and violence against innocent citizens. और कहाँ ना कहाँ हम सेंटर को और वहाँ स्टेट को दोषी करना चाहते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपहोल्डिंग ऑफ राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एंड लिम उन्होंने एब्डिकेट किया है टोटली। उतने शब्द बोल के मैं हमारे पहले वक्ता मौलाना दरियाबादी जी को कहूँगा कि आप ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें, और हमारी जो प्रेस रिलीज है उसमें हमारे डिमांड्स हमने हाईलाइट किए हैं, और मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। थैंक यू। वी वेलकम फादर फ्रेजियर मैस्करिनस, जो पूर्व प्रिंसिपल थे सेंट जेवियर्स कॉलेज के, और फिलहाल अभी प्रमुख धर्मगुरु है सेंट पीटर्स चर्च के बैंड्रा में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए। इंसानियत की आवाज़ उठाने के लिए हम सब लोग यहाँ जमा हुए। मणिपुर हमारे मुल्क की एक अहम रियासत है, एक अहम स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, सरहदी इलाका है, बहुत नाजुक इलाका है। वहाँ इससे पहले भी बहुत सारे मसाइल उठते रहे हैं, आप सब लोग प्रेस के लोग सब जानते हैं। बहुत मुश्किल से वहाँ पर अमन व अमान कायम हुआ था। पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर कुछ साजिश करने वाले वहाँ का अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि पूरे मुल्क में लोग करते रहते हैं। इस मुल्क में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि यहाँ पर अमन व अमान कायम रहे। उनका ये सोचना है कि यहाँ पर एक ही तहज़ीब के लोग, एक ही रंग के लोग रहें। अलग अलग तहज़ीबें, अलग अलग कल्चर जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है वो किसी तरह से मुतासिर हो जाए। मणिपुर जैसा कि हम सब जानते हैं, वहाँ पर हमारे ईसाई बिरादरान, क्रिश्चियन भाई बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो उनके हुकूक को छीनने की साजिश है। जो वहाँ ट्राइबल्स हैं, कबायली हैं, उनके हुकूक को छीनने की साजिश है, और ये बहुत अरसे से हो रही है। पिछले कुछ दिनों से इसमें तेज़ी आई। हम सब जानते हैं बड़े पैमाने पर मारकाट हुई।
अभी डोल्फी भाई ने बताया कि तकरीबन 60 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जितने बड़े पैमाने पर वहाँ फसाद हुआ है, कत्ल गारत गिरी हुई है, ये तादाद उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा करोड़ों अरबों रुपए की मालियत ख़राब हुई, लोगों के मकान जले, जंगल खेत खलिहान जले और इबादत गाहों को जलाया गया। जैसे कि बताया गया 100 चर्चेस को जला दिया गया। दूसरी इबादत गाहें, दूसरे कमज़ोर तबकात के जो लोग हैं वो उनका जो नुकसान हुआ होगा वो उसके अलावा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के जो अहम जिम्मेदार, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, जिनके ज़िम्मे मुल्क में अमन व अमान कायम करने की जिम्मेदारी है, उन्होंने आज तक इस पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। अब तक कर्नाटक का इलेक्शन था, रैलियाँ चल रही थी, एक दूसरे पर अलग अलग किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, मणिपुर जल रहा था, किसी ने कोई तवज्जो नहीं की। अब जबकि इलेक्शन ख़त्म हो गया तो अब राजस्थान शुरू हो गया है, मणिपुर पर अब भी तवज्जो नहीं है। ये क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में अमन व अमान कैसे कायम होगा? किसकी जिम्मेदारी है? जब हुकूमत के जिम्मेदार इस तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं हुकूमत के इस तरह के अमल की। हम मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं हुकूमत से कि वहाँ पर फ़ौरन अमन व अमान कायम किया जाए। ज़िम्मेदारों को, वज़ीर आज़म को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, दूसरे ज़िम्मेदारों को वहाँ का दौरा करना चाहिए। वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो कैंप्स की, तरस आता है। जानवरों से बदतर ज़िंदगी है। छोटे छोटे से कमरे में इतने लोगों को भर दिया गया है, मुझे देख के ताज्जुब हुआ कि सांस कैसे लेते होंगे। करवट लेने की जगह नहीं है। उनमें बूढ़े भी हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, सारे लोग एक साथ छोटी छोटी जगहों पर। किस तरह की ज़िंदगी वहाँ गुजारी जा रही है और ये कब तक ऐसा होगा? हम डिमांड करते हैं हुकूमत से कि ये सूरत हाल को फ़ौरन सुधारा जाए। जो लोग मारे गए उन्हें भरपूर मुआवजा दिया जाए, जिनका नुकसान हुआ उनकी तलाफी की जाए। जो इबादत गाहें बर्बाद हुई हैं, जलाई गई हैं, उनको फिर से बना करके दिया जाए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ये इंसाफ का तकाजा है, ये इंसानियत का तकाजा है। हम यही आवाज़ लेकर के आपके सामने आए हैं कि आप लोग इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, हमारे साथ लोगों तक पहुंचाइए, दुनिया तक पहुंचाइए, ताकि हुकूमत को शायद होश आ जाए, इस सिलसिले में कुछ काम करे। और अगर नहीं हो, हुकूमत को होश आता है तो पब्लिक को होश आ जाना चाहिए कि ऐसी हुकूमत को क्या करना है। पब्लिक आइंदा इसके बारे में सोच करके रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना दरियाबाद जी। मैं फादर फ्रेजर से गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। मी खरं म्हटलं तर मराठीमध्ये बोलायला पाहिजे, पण हा विषय एवढं नाजूक आहे की शब्द निवडलं पाहिजे मला वाटतं, म्हणून मी इंग्रजीमध्ये बोलणार। पण सारांश असा आहे की मला वाटतं आणि असं दिसून येते, संशय निदान आहे की आता 20 वर्षापासून ठिकठिकाणी सरकार हिंसाच्या विरुद्ध चांगलं योग्य कारवाई करीत नाही। आणि ते त्यांचे हेतू असेल की नाही माहीत नाही, पण वारंवार आपल्याला दिसून येतं असं। 2002 मध्ये आपण बघितलं गुजरातमध्ये काहीतरी घटना घडली, बरोबर, ते खूपच खेदाची घटना आहे। परंतु जो हिंसा त्याच्यानंतर चालू झालं एवढं वेळासाठी आणि सरकारने योग्य ते कारवाई केलं नाही, ते मला वाटतं खेदाची पण आहे। त्याच्यानंतर ओरिसामध्ये पण आपल्याला तसं दिसून येते आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी असं आपल्याला दिसतात। पण आता मणिपूरमध्ये परत हे उद्भवलं
म्हणून खरं म्हटलं तर आपण दक्ष घेतलं पाहिजे. I'd like to speak in English because it's a very sensitive topic. I do feel that different governments in the last 20 years have not been taking the effective type of measures to bring about a stop in violence when it occurs. Sometimes violence does occur because of some incident that takes place for some reason, and the state is able to take effective measures to stop that. But it looks like different governments in different parts of the country have deliberately, this is of course something that we we feel this is what is happening, but different parts of the country we have governments not taking effective action to stop violence, and violence continuing at a very, very general and widespread manner. And I think maybe if I mention Gujarat, it would be appropriate, because in 2002 a very sad incident took place at Godhra. But for what the government did not do and did do, because the government allowed the bodies of those who were unfortunately burnt to be taken in procession right through Gujarat. And in other words, that was an instigation for violence. And when violence occurred, effective measures were not taken for several days. And we know the amount of damage that took place. More than 1,000 people were killed, and mainly of the Muslim community. We have something similar that happened in Kandhamal, also in Orissa. Again, a very sad incident of a religious leader being murdered. But for the violence that took place against, in such a widespread manner against a Christian community, because there was just an allegation that it was a Christian who did that deed. Now, this is something that could have been controlled by the government of the time, but the government did not take effective action for days, and it was widespread violence against a particular community. I do think this is happening at the moment in Manipur. It has happened for 3 or 4 days, when perhaps there was some protests by the Kuki and the Naga tribes. And they had a reason to protest, which I will explain in a moment. Suppose there was widespread unrest in the Kuki and Naga areas, and they, in one place, perhaps they might have taken to violence. We really don't know, because as all of us know, the internet was shut down. So what is the spark that started this conflagration? We really don't know. However, the fact that something might have sparked off a response does not mean that the whole Christian community in that area is targeted. And more than about 50 churches, we are told, have been burnt. Many homes of Christians have been destroyed. More than 100 people have been killed. And there's widespread destruction, widespread fear. My brother just now spoke about a place in which the Christians have taken shelter, and they are crammed in one room with not even an inch to move. Now, this is the situation of the government not taking sufficient action when violence erupts, for whatever reason. In fact, there is a great feeling that the government wanted it to happen. It did seem to be state-sponsored violence, because it was not curbed for a long time, and churches are very easy to protect. They are easily identifiable. That the administration did not take the action that was required, that it shows a possibility of complicity of the administration in this act and in this series of acts. And that is why I think all of us
whether we are Christians or Hindus or Muslims or whatever religion or ethnic group we come, we should all stand up against this, and we should say that governments should do their job, which they don't seem to be doing, again, for reasons we don't know. It does seem to be ulterior motives. Now, my friends, I am speaking here as a Christian priest because some of my own colleagues were affected. You know that I belong to a Christian organization called the Society of Jesus, or the Jesuits. And we have all types of services being rendered in education, in health, social welfare, all over the country and all over the world. So in the Northeast, we have a number of schools, churches, we have a college, we have different types of services of humanity for all people of all religions. Now, even my colleagues, easily identified in their cassocks, they were attacked. Their jeep was burnt. Some of them were hurt. Luckily, they were minor hurts, but they had to run for their lives, which does mean that the type of violence that erupted there was very widespread, and it was targeted at Christians. I'm also speaking as a social scientist. I have a PhD in sociology, and my thesis was precisely on the culture of indigenous people, the tribals. So I think it is very clear that the reason why this unrest, peaceful unrest that started, was against the move to bring the Métis under the tribal nomenclature, to bring them under the STs, the scheduled tribes. Now we know that the scheduled tribes are listed in the Constitution, and that has been done after a lot of research on the type of culture that they have. Internationally, the International Convention on Indigenous People gives criteria. One is that you can show that they were the earliest settlers in the region. The other is that you can show that their culture is very different from the mainline culture. And the third would be backwardness. Now, under all three, the Métis do not qualify to be STs. They are the majority dominant community. They are not backward. They cannot show that they were in the earliest settlers of that region, and their culture is also mainline culture. It's not tribal culture. So isn't it right for the tribals of that area to protest when these type of proposals come up? And that is what the Kukis and the Nagas did. Please remember that the Kukis and the Nagas were freedom fighters for India against the British. They are the ones who made it clear to the British that they could not control India, because they mutinied so often, and there were periods of time in which a whole area in the Northeast was free from British rule because of the opposition of the Nagas and the Kukis and the other indigenous people there. So they are our freedom fighters. So for them to be treated, whether they are Christians or Muslims or Hindus or not, for them to be treated in the way they are being treated now, targeted violence against them, that is, I think, a loss for the whole country. Because no country can survive, leave alone prosper, can survive if violence is perpetrated against a large group. And the tribals are a large group there. They are not the majority. They may be 30 or 40%. But it's a large group who are being targeted. And so, my friends, I think all of us should stand up for justice. This is a justice issue. This is an issue that the government of the day cannot say, okay, I'll make you the tribal group, or I'll make you a scheduled caste. No, you can't do that. There are criteria to declare groups as tribal or scheduled caste, and that process has to go through. Only then can you have this proposal put up.
which has not happened yet. And therefore it is really a political move which the tribals have every right to peacefully protest against. And that is what I think they did. I'd like to repeat, if it had gone into a violent incident, those people who perpetrated the violence should be brought to book, but not the whole community, the whole ethnic group targeted. This can only be done through complicity of the government. And that is what we are sad about, and we protest. So let us all stand up for the dignity of every individual and stand up for the Constitution of India, which gives a place for every group in our country, and especially for minority groups. And for the STs and the SCs are a specially chosen group because of the long history of oppression that they have suffered. So they should not be targeted in this manner. That is my submission, and I do hope all of us all over India will support the tribals of Manipur. Thank you. Questions will be after the speakers have made it. We will keep the open house for people to ask questions, including members of the media. मैं गुजारिश करूंगा हमारे वेटरन जर्नलिस्ट निरंजन जी तकले को वो बात करें. निरंजन तकले, इफ यू आर अवेयर ऑफ, उनका एक बुक आया था हु किल्ड जज लोया. मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, अगर आपने खरीदा नहीं हो और पढ़ा नहीं हो, यू मस्ट बाय दिस बुक, रीड इट, because he is one of the strongest contenders against his own personal life. Basically wrote this book when he was investigating the whole process of how Judge Loya was killed. He has definitely said it in no uncertain terms. मेरी गुजारिश ये है कि आप सब ये किताब को खरीदना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सर्कुलेट भी करना चाहिए. निरंजन तकले जी. मराठीत बोलू का हिंदी इंग्लिश? एक तर मी मणिपूरबद्दल बोलतोय कारण मी मणिपूरला गेलोय, राहिलोय, आणि महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच जणांना तिथला एक ॲस्पेक्ट माहीत नाही आहे. तो म्हणजे मणिपूर आणि म्यानमारच्या बॉर्डरवरती एक गाव आहे, आणि त्या गावाचं नाव, शेवटचं गाव भारतातलं, त्या गावाचं नाव आहे मोरे. आणि आझाद हिंद सेनेची, म्हणजे सुभाषचंद्र बोसांची आझाद हिंद सेना जेव्हा भारतात येत होती आणि मोरे या गावापर्यंत ते आले, आणि तिथं त्यांना निरोप आला की सुभाषचंद्र बोसांचा मृत्यू झाला आहे, तर ती आझाद हिंद सेनेचे सर्व सैनिक त्याच ठिकाणी परमनंटली स्थायिक झाले. आणि ते एका मराठी माणसावरून पडलेलं नाव आहे मोरे. त्या गावामध्ये आजही 3000 मराठी कुटुंब राहतात, आणि त्याही गावामध्ये आत्ताच्या वेळेला हिंसाचार झालेला आहे. आता हा जो सगळा भाग आहे, म्हणजे मैतेई या कम्युनिटीला शेड्यूल ट्राईब्समध्ये ॲड करायचं, या शेड्यूलमध्ये, म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये जी शेड्यूल्स तयार केलेली आहेत ती शेड्यूल कास्टसाठी एक शेड्यूल आहे, ट्राईबसाठी एक शेड्यूल आहे. तर ट्राईबचं शेड्यूल हे कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये लिहिलं गेलेलं आहे, नमूद केलं गेलेलं आहे. त्या शेड्यूलमध्ये राज्य सरकार किंवा त्या राज्याचं न्यायालय हे त्यात हस्तक्षेप करून त्याच्यामध्ये एका ट्राईबला, एका समुदायाला त्याच्यामध्ये ॲड करायचा प्रयत्न करतं. मैतेईची लोकसंख्या 2011च्या सेन्ससप्रमाणे मणिपूरमध्ये 53% आहे. तर 53% लोकसंख्येला अचानक ओव्हरनाईट शेड्यूल ट्राईबमध्ये समावेश करा अशी शिफारस केली जाते. तिथला बाकीचेही डेमोग्राफिक गोष्टी ज्या आहेत की लोकसंख्या वाढते आहे, जागा रिस्ट्रिक्टेड आहे, राहण्यायोग्य जागा रिस्ट्रिक्टेड आहे, त्यामुळे लोक पसरतात. त्यात सायमल्टेनियसली फॉरेस्ट ॲक्टमधल्या अमेंडमेंट करायच्या, म्हणजे लोकांना मुळामध्येच हे सगळे ट्राईब्स जे आहेत, कुकी, नागा, हे आजूबाजूच्या परिसरातल्या जंगलांमध्ये मग ते स्थलांतरित होतात राहायला. आता ही गोष्टसुद्धा वास्तव आहे, जो महाराष्ट्रातही आपण ती समस्या पाहतो की हजारो वर्ष
हजारो वर्ष या देशामध्ये जंगलांचं राखण आणि रक्षण कोणी केलं असेल तर ते या ट्राईब्सनी केलेलं आहे. आता ते तिथं राहायला जातात तर त्यांच्या विरुद्ध तो अमेंडमेंट केलेला फॉरेस्ट ॲक्ट आणायचा आणि त्याच्यावरून त्यांचं ऑपरेशन सुरू करायचं. आणि त्याचा परिणाम या सगळ्या गेल्या 3 वर्षामध्ये असंतोषाचा जो परिणाम झाला तो या आत्ता घडलेल्या हिंसाचारामध्ये आणि दंगलीमध्ये आपल्याला दिसतो. यात काही गोष्टी, कारण मी मणिपूरमधल्या पत्रकारांशी सुद्धा बोललो, माझे जे इथे मित्र आहेत डॉक्युमेंटरी फिल्म्स करतात, त्यातल्या एकाची येईल सुद्धा काही दिवसामध्ये डॉक्युमेंटरी. मला एकदम स्पेसिफिक प्रश्न विचारायचा आहे की अचानक गेले 60 दिवस म्हणजे हा हिंसाचार होण्याच्या आधी 60 दिवस वनवासी कल्याण आश्रमचे 50-60 जण तिथं अचानक तिथं का गेले आणि काय करत होते त्या सगळ्या परिसरामध्ये फिरून. सुनील देवधर आपल्याला माहिती आहे त्रिपुरामध्ये ज्यांच्या सांगण्यावरून खूप प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला, त्या सुनील देवधरांच्या सल्ल्याने कोणाला तिथं खास पाठवलं गेलं होतं आणि त्या 2 व्यक्ती ज्या गेलेल्या तिथं त्या निश्चितपणे त्या ठिकाणी काय करत होत्या. हा हिंसाचार वाढवण्यासाठी मला असं वाटतं, माझा असा आरोपही आहे की 100% ते हे जे कल्याण आश्रमवाले गेले होते आणि त्यानंतर हे जे गेले याचं आणखीन एक कारण आहे. 98-99ला म्हणजे 9 मेलाच 98-99ला आपल्या इथं कळवण तालुक्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात अभोडा नावाचं गाव आहे जिथं ख्रिश्चन मिशन इन ॲक्शन नावाच्या एक हॉस्टेल होतं, ते जाळण्यात आलं होतं पूर्णपणे आणि लगेच 2 दिवसामध्ये डांगमध्ये पण हल्ले झाले होते. हे सगळे प्रकार होण्याच्या आधी एक्झॅक्टली 2 दिवस आधी नाशिकच्या भोसला मिलिटरी स्कूलमध्ये याच वनवासी कल्याण आश्रम, बजरंग दल आणि दुर्गा वाहिनीचं प्रशिक्षण शिबिर झालं होतं. आणि त्यामुळे या प्रत्येक गोष्टीमागे यांच्याच गृहमंत्र्यांच्या भाषेत सांगायचं तर एक क्रोनॉलॉजी असते. तर ती क्रोनॉलॉजी आपण जर समजून घेतली तर याच्यामध्ये या हिंसाचारामध्ये कोणताही योगायोग वाटत नाही. आणि जसं म्हणजे महात्मा गांधींनी त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांना स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी सांगितलं होतं की या 7 राज्यांमध्ये जाऊन तुम्ही काम करा. त्यात चुनीभाई वैद जे होते ते आसाममध्ये जवळजवळ 12 वर्ष त्या काळात राहिले आणि त्यांनी असं सांगितलं होतं की आपल्या शरीराच्या बोटांप्रमाणे ही राज्य आहेत. बोटाला जर काही झालं तर हात निकामी होतो आणि ही या राज्यांमध्ये जर काही झालं तर संपूर्ण हात निकामी होईल. त्यामुळे यांच्याकडे लक्ष देणं, यांचं संरक्षण करणं आणि यांच्या प्रत्येक प्रगतीच्या आणि हिताच्या गोष्टीसाठी प्रयत्न करणं हे जरुरी आहे. आज या सीमावर्ती राज्यांमध्ये कशा पद्धतीचा हिंसाचार होतोय आणि मेरी कोम सारखी जिनी 6 वेळेला वर्ल्ड चॅम्पियनशिप जिंकली आणि भारताला गोल्ड मिळवून दिलं 6 वेळेला, ती मेरी कोम पंतप्रधानांना टॅग करून ट्विट करते की माझं राज्य वाचवा, ते जळतंय, आणि तिच्या ट्विटला रिप्लाय सुद्धा केला जात नाही. कंगना राणावतला सर्दी झाली तर नरेंद्र मोदींना वेळ मिळतो ट्विट करायला आणि या देशाला 6 वेळेला जागतिक पुरस्कार मिळवून देणाऱ्या मेरी कोमची ही व्यथा ती ज्या वेळेला मांडते की माझं राज्य जळतंय ते वाचवा, त्याला एक रिप्लाय सुद्धा त्याच्यावरती जात नाही. ना पंतप्रधानांचा जातो, ना या देशाच्या गृहमंत्र्यांचा जातो, ना संरक्षण मंत्र्यांचा जातो. संरक्षण मंत्री आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे आता या सगळ्या जे काही सत्यपाल मलिकांनी जे काही सांगितलं मला तर असं वाटतं ते स्वसंरक्षण मंत्री आहेत. ते संरक्षण मंत्री होते, ते आता स्वसंरक्षण मंत्री झालेले आहेत. पण भारताच्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या एका बाजूला लद्दाखमध्ये चीन आलेला आहे, ज्या चित्रपटामध्ये आपण त्या 3 इडियट्समध्ये बघितलं होतं ते पँगॉंग लेक, त्या पँगॉंग लेकवरती चीनने आता पूल बांधलेला आहे आणि त्या तिथपर्यंत आपल्याला ॲक्सेस नाही आहे. जिथं आपल्याच म्हणजे गेल्याच 5-6 वर्षापूर्वी जिथं चित्रपटाचं शूटिंग होत होतं तिथं आज आपली लोक जाऊ शकत नाहीत त्या पँगॉंग लेकला. अरुणाचल प्रदेशमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ चीनने घेतला आणि एक गाव वसवलं अरुणाचल प्रदेशमध्ये. आणि या सीमावर्ती राज्यांमध्ये ऑलरेडी ते अरुणाचल प्रदेशला त्यांच्या नकाशात दाखवतात. शेजारी मणिपूरमध्ये आज अशा पद्धतीचा हिंसाचार सुरू झालेला आहे. कशा पद्धतीने या 7 सिस्टर्स आपण ज्यांना म्हणतो या 7 बहिणींचं रक्षण हे उरलेल्या राज्यांमधले भाऊ कधी करणार आहेत. आणि ही जबाबदारी पहिली या देशाच्या पंतप्रधानांची आणि गृहमंत्र्यांची आहे.
इतक्या भयंकर प्रकरणावरती पद्धतीने त्या ठिकाणी हिंसाचार होतो. 15-15, 16-16 हजार जणांना विस्थापित करावं लागतं, त्यांच्यासाठी कॅम्प्स ठेवले जातात. आणि तिथं सुद्धा म्हणजे आसाम रायफल्सची तिथं कॅम्प्स आहेत. आसाम रायफल्सच्या बद्दल सुद्धा याआधी कशा पद्धतीचं त्या लोकांच्याच काय वेदना होत्या, त्या 1554 का 1564 फेक एन्काउंटर्सच्या कहाण्या, त्याच्यावरती सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली. हे कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आलं होतं, ॲप्सपाचा त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने म्हणजे दमनकारी पद्धतीने त्याचा वापर केला जातो, या सगळ्या गोष्टी असताना अतिशय म्हणजे चेंगराचेंगरीच्या अवस्थेमध्ये ते कॅम्प केलेले आहेत. कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प म्हणावं, हिटलरचे अशा पद्धतीचे कॅम्प आहे. त्याला नाव यांनी जरी रिलीफ कॅम्प दिलेलं असलं तरी तिथं जाऊन त्यांना रिलीफ किती मिळणार आहे ही शंका आहे. आणि तोपर्यंत त्यांची घरं दारं जी काही उद्ध्वस्त होत आहेत, त्यांच्या व्यवसायाची ठिकाणं जी काही उद्ध्वस्त होत आहेत, ते पुन्हा कोण उभं करून देणार आहे? कारण याबद्दल भारतीय जनता पक्ष तिथं सत्तेमध्ये असलेला काहीही बोलत नाही. तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी जस्टिस केहर, सुप्रीम कोर्टाचे जस्टिस केहर यांना जबाबदार धरून 40 पानाचं आत्महत्येचं पत्र लिहिलं. त्याने आत्महत्या केली माजी मुख्यमंत्र्यांनी. 40 पानाचं आत्महत्येचं पत्र लिहिलं. अशा इतक्या भयंकर संवेदनशील झालेल्या राज्याकडे आपण कशा पद्धतीने बघणार आहोत? कुठलाही देश, कोणता देश आनंदी समजला जातो? हॅपीनेस इंडेक्समध्ये तर आपण सगळ्यात खाली आलेलो आहोत. आता प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये आता इथं जे कोण पत्रकार असतील, ही आपली जबाबदारी आहे ना. प्रेस फ्रीडम कोण फ्रीडम देत नाही, ते आपण ॲसर्ट करायचं आहे. मला दिलेलं स्वातंत्र्य मी ॲसर्ट करायचं आहे, असं प्लॅटरमध्ये आणून कोणी देणार नाही आहे. हे प्रश्न सत्तेला विचारायचं काम आपली जबाबदारी आहे. आणि या सत्तेला आपण म्हणून प्रश्न विचारले पाहिजेत की इतक्या संवेदनशील अवस्थेमध्ये ज्या वेळेला झालेलं आहे, याच्या पुनर्वसनाचा काहीही विचार नाही. सरकार अत्यंत बेबंदशाही, भाजपचे आमदार प्रोटेस्ट करतात मणिपूरमध्ये आणि त्याची साथ मिळते या हिंसाचार करणाऱ्यांना. याचा कुठेतरी गंभीरपणाने विचार व्हायला हवा. कशा पद्धतीने सगळ्या देशामध्ये वातावरण निर्माण करायचं आहे, किती द्वेष निर्माण करायचा आहे. म्हणजे ज्या देशातली मायनॉरिटी ही आनंदी आहे, तो देश आनंदी आहे असं म्हटलं जातं. आपण आपल्या आरशामध्ये तोंड पाहून आपण आपल्याला प्रश्न विचारू आणि आपण उत्तर देऊ की माझ्या देशातली मायनॉरिटी ही आनंदी आहे का? आपणच आपल्याला प्रश्न विचारावा आणि मग आपला देश आनंदी आहे का याचा विचार करावा. या स्थितीपर्यंत आपण आलेलो आहे. इतक्या भयंकर पद्धतीने दमन केलं जात आहे, हत्याकांड घडवली जात आहेत. आणि एक नवीन जेनोसाइड आपल्याला बघायचं आहे का? जगाने एक हिटलर बघितला आहे, आपल्याला नसेल बघायचा तर आपल्याला आज त्याच्या विरोधात उभं राहावं लागेल. नाही तर खरोखर येणाऱ्या पिढ्या माफ करणार नाहीत, अशी परिस्थिती आज झालेली आहे. म्हणून अगदी मनापासून मी नाशिकहून तेवढ्यासाठी फक्त आज इथं आलो की आज आपल्याला अलर्ट होण्याची, जागं होण्याची, खडबडून जागं होण्याची गरज आहे. आज जे मणिपूरला आलेलं आहे, जे ओरिसात झालंय, जे त्रिपुरात झालंय, जे गुजरातमध्ये झालंय, शेजाऱ्याच्या दारावरती संकटाने थाप मारली त्यावेळेला मी माझं दार उघडून बाहेर आलं पाहिजे. कारण शेजाऱ्याच्या दारावर पडलेली संकटाची थाप उद्या माझ्याच दारावर वाजणार आहे. निदान इतका तरी कॉमन सेन्स आपण जागा ठेवला आणि आपल्या दारावरती संकटाची थाप पडू नये असं वाटत असेल तर आज आपण आपल्या शेजाऱ्याच्या रक्षणासाठी, त्याच्या हितासाठी, त्याच्या संरक्षणासाठी आज आपण बाहेर पडावं, अशी आत्ताची परिस्थिती आहे. म्हणून फादरनी पण तसं सांगितलं की आज खरोखर आपण आपल्या संविधानासाठी, आपल्या संविधानाने आपल्याला जे हक्क दिलेले आहेत, अधिकार दिलेले आहेत, कर्तव्य दिलेली आहेत, या गोष्टींसाठी आपण उभं राहणं अत्यंत गरजेचं आहे. आपण जर ताठ उभे राहिलो आपल्या संविधानातल्या हक्कांसाठी आणि कर्तव्यांसाठी तर सत्तेला सुद्धा उभं राहावं लागेल. जे आपण बघितलं म्हणजे दिल्लीला शेतकऱ्यांनी 13 महिने आंदोलन केलं आणि अत्यंत उन्मत्त झालेल्या सत्तेला सुद्धा झुकवलं. त्यामुळे अशा पद्धतीने जर का लोकशाही पद्धतीने, अहिंसक पद्धतीने जर का याचा विरोध केला आणि जे खरं आहे, जे सत्य आहे ते सांगितलं आणि सैतानाला शर्मिंदा केलं तर मला स्वतःला खात्री वाटते की आपण पुन्हा एकदा हे वाचवू शकू. अशा पद्धतीने मला असं आवडणार नाही की माझी मुलगी एका अत्यंत भयग्रस्त वातावरणात लहानाची मोठी होती आहे. तिला तिच्या मनातलं बोलायची भीती वाटते आहे, दुसऱ्याच्याच मनातलं ऐकावं लागतं आहे सक्तीनं. अशी अवस्था होऊ नये
आणि म्हणून आपण आज म्हणजे मायनॉरिटीज हा ख्रिश्चन, हा मुस्लिम, हा दुसरा असा समाज, समुदाय, जात, धर्म म्हणून म्हणत नाही मी. हे माझ्याच देशातले बांधव आहेत, यांच्यासाठीच आपण उभं राहण्याची गरज आहे. त्यांच्यासाठी उभं राहिलो तर माझ्यावरती वेळ येईल त्यावेळेला ते उभे राहतील. आणि म्हणून आपण खरंच फादरनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या कॉन्स्टिट्युशनल ड्युटीज आणि राईट्ससाठी उभं राहू, ठामपणे उभं राहू आणि सत्तेला सुद्धा त्याच्यासाठी काही ना काहीतरी करायला लावू. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. विस्तार तरीके से निरंजन जी ने हमें संबोधित किया है. मैं इरफान इंजीनियर से गुजारिश करूंगा, जो डायरेक्टर है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म, उनको मैं कहूँगा कि आप संबोधित करें. First of all, I would like to congratulate the organizers of this press conference, United Against Injustice and Discrimination, because normally Northeast is ignored by rest of the country, and we very sensitively are responding to the pain of citizens of Northeast. This is not something that erupted suddenly. It was building up gradually, slowly, step by step, and the state ignored all the early warnings and the signals of this conflict. In fact, it further fueled the conflagrations of the conflict that was going on in Manipur. Let us first note that this government has support of 54 out of 60 MLAs amongst tribals, Kukis, Nagas, Meiteis, all. BJP alone has 37 MLAs out of 60. It is a majority on its own. Therefore, there is virtually no opposition or very weak opposition in Manipur, and therefore they are bulldozing certain policies in Manipur which is giving rise to this conflagration. 53% Meiteis and 41% scheduled tribes already. That will make 94%. If you see the statistics of condition of scheduled tribe and Meiteis, Meiteis are actually Vaishnavite Hindus. If they are scheduled tribe, whole of India is scheduled tribe. Nearly 80% plus the 9% who are already scheduled tribe, almost 89% of India will be scheduled tribe. Meiteis are not only Vaishnavite Hindus, it's a caste-ridden society as well. The Brahmins there are called Brahmanos. Then there are Kshatriyas, and then there are Shudras. 3 layers of caste system. The Brahmanos are dominant there. They are priests. They during Manipuri festivals they have the responsibility of cooking food, etc. The Kshatriyas, where as we all know they are supposed to be in army, and normally the chief ministers in Manipur have come from Kshatriya caste. Now if this is scheduled tribe, then whole of India should be scheduled tribe. In fact, it is to neutralize the rights of other scheduled tribes that Meiteis are now being encouraged. This conflagration has not emerged. On one hand, what is happening is that the state is grabbing the forest land from scheduled tribes, from the Kukis and Nagas. They are grabbing their land, converting their land into reserved forests and wildlife sanctuaries. On one hand. And the whole conflict began from Surachandrapur, from where large number of tribals were evicted in terrible conditions. They were just bulldozed. This government believes in bulldozers, shock and awe policies. They were just thrown out of their forests and from their livelihoods, which they were having, through which they were living for many generations.
They were just evicted from there. And the scheduled tribes saw that this is happening continuously. They are being evicted from their forests on one hand, and on the other hand, High Court order came forwarding a recommendation that government of Manipur should forward the demand of Meiteis to be recognized as scheduled tribe to government of India. Government of India should have, I mean, the responsibility is not only of Manipur government, but also government of India. Government of India, by keeping silent, allowed the Meiteis to put pressure on them to mobilize with the support of the government of Manipur and inflame this whatever is happening now. 60 people died in a small state like Manipur. 35,000 people in relief camps in Manipur. That is just not acceptable. It is, if I may say so, a violence of genocidal proportion. Even though in a small state like Manipur, if these many people are displaced, then now these ethnic fault lines are also religious fault lines. The scheduled tribes are by and large Christians, and the Meiteis are by and large Vaishnavite Hindus with certain exception. But in this conflict, even Meitei Christian churches were burnt and attacked. So what is being presented to us, in fact they are hiding the figures. The mainstream media and the government is hiding the figures, hiding the identities of the victims, so that one feels, oh, it's something that is happening in Northeast, I am not concerned. No. But even Meitei Christian churches are being attacked in Manipur. So this is not only ethnic, but it is out and out a communal conflict encouraged by the state. And as Father Fraser rightly pointed out, that what happened in Gujarat, what happened in Kandhamal, and in both these states, BJP was directly in power in Gujarat, and BJP was in coalition government with Biju Janata Dal in Orissa when the Kandhamal genocide happened. And now after gaining majority in Manipur, this is happening. What should we conclude? What should we say about Sabka Saath, Sabka Vikas? These are merely slogans. What is happening is something just quite the opposite. Look at the facts and figures, and I'll end this because there has to be an open session. I'll just end, but I can't end without giving certain facts. 90% valley is only 10%, and 90% is hill area in Manipur. Scheduled tribes occupy hill area and the valley. Valley by Meiteis, by and large. All the facilities, if you look at human development indices of infant mortality rate, institutionalized birth, cooking gas, clean cooking fuel being provided to people, tapped water being provided to people, you'll find that 90% of states figure will say all the facilities are provided to this 10% land which is in valley. That is the Imphal East and Imphal West, in this area only. And if you go to hills, you'll find 3% clean cooking gas being provided to hill people, clean water, drinking water, tap drinking water being likewise provided to 4%, 5%, 8% depending on the districts. The figures are as low as these, but they are different district wise. Now actually Meitei, which has all the comparative privileges, wants also scheduled tribe because it wants to monopolize employment, government employment further. If you see government, look at the electoral figures, why BJP got majority.
scheduled tribes are 41%, but they can elect only 33% of MLAs. Look at the injustice. Look at the injustice. 40 MLAs are from non-scheduled tribe, and scheduled tribes have only 20 MLAs, whereas their population percentage is 41%. So look at injustice, and therefore there is no development in hill areas. This also points out to this last thing I'll say, this also points out to the fact that other than public sector employment, there is no livelihood except some agriculture. And as a result of this, now Maithis are saying, in order to preserve our culture, we want scheduled tribe status. How will it help? Cultures can be preserved by will of people, by people following those cultures, and not by state patronage. So what they want is state patronage for their culture, which automatically means unconstitutional discrimination against scheduled tribe, which is already taking place. This is institutionalization of that discrimination. There are many things to say, but I guess we should keep it open for an open session, and we are ready for question and answers. बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी. मैं फरीद भाई से जरा एक शब्द बोलिए, एटलीस्ट एक मैसेज दे दीजिए. ये आदाब, नमस्ते. हमने फादर से जो बातें सुनी और अब इंजीनियर साहब से सुनी और मौलाना ने जो बताया, हमारे ढकेले साहब ने जो हकीकत बताई मणिपुर जो हमारे हिंदुस्तान में, उसमें इस तरह का जुल्म हुआ, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और गृह मिनिस्टर साहब सब कर्नाटक के इलेक्शन में और लोगों को तोड़ने में लगे हुए थे, और यहाँ लोग जल रहे थे. जो हमारी छोटी पीसफुल माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन हमारी बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे लोग पीस लविंग लवर्स लोग हैं लोग, इनके साथ में इतना जुल्म हुआ है. तो मैं चाहता हूं कि हमारा पूरी इंसानियत को इनका सपोर्ट करना चाहिए, और हमारा हिंदुस्तान जो है तमाम धर्मों का एक गुलदस्ता है, उसको जलाने की पूरी ताकत से कोशिश की जा रही है. अगर हम आज नहीं जागेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमको माफ़ नहीं करेगी. हमारा यही कहना है. शुक्रिया. मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सलीम खान से जरा दो शब्द बोले, और उसके बाद मिस्टर विश्वास. दोस्तों, बहुत सारी बातें आ गई हैं सामाजिक और सांप्रदायिक, लेकिन इसका एक राजनीतिक एंगल भी है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ. बार बार ये बात कही जा रही है कि जब मणिपुर जल रहा था तो हमारे गृह मंत्री कर्नाटक में थे, और कर्नाटक में उन्होंने ये दावा किया था कि अगर कांग्रेस, उनको ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो यहाँ पर जो है सांप्रदायिक दंगे होंगे. सोचने वाली बात यह है कि यानी बीजेपी अगर उसमें रहेगी सत्ता में तो सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, और उसके फौरन बाद जो है वो मणिपुर में डबल इंजन सरकार ने दंगे देखे. एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बीजेपी के लिए दंगा जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, वो असल में वोट जमा करने की एक मशीन है. इसीलिए गुजरात में उन्होंने कहा था कि हमने जो है वो 20 साल पहले एक सबक सिखाया, और उसके बाद फिर उन्होंने जितने लोग दंगे में जिनके ऊपर जुर्म साबित हो गया था उनको 15 अगस्त को छोड़ा, और अभी भी जो नए फैसले आ रहे हैं गुजरात हाई कोर्ट के, उसमें उन तमाम लोगों को जिनको के पूरी उम्र कैद की सज़ा हुई थी उनको छोड़ा जा रहा है. तो ये लोग लोगों से दंगे करवाते हैं और फिर उनको जो है वो सरकार के संरक्षण में छोड़ते हैं. इसी वजह से नए नए जगहों पर दंगे होते हैं, इसलिए कि दंगा करने वालों को मालूम है कि ये सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ये सरकार हमको सज़ा नहीं देगी. अगर लोगों को दिखाने के लिए जेल में भेजा भी गया तो कुछ दिनों के बाद हमको जो है वो तमाम सबूतों को छुड़ा के जो है वो छोड़ दिया जाएगा. तो जब तक कि ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे उस वक्त तक दंगे नहीं रुकेंगे, उस वक्त तक इनोसेंट लोगों का खून बहना नहीं रुकेगा, उस वक्त तक लोगों को जो है वो इस तरह के कैंप्स में नहीं जाना पड़ेगा जिसके बारे में ये कहा गया कि वो कंसंट्रेशन कैंप जैसी सिचुएशन है. तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो है हमारा खून ना बहे, हमारे घर नहीं जलें, हमारी इबादत गाहें जो है वो महफूज रहें,
तो हमको जो है इन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर हमने नहीं सोचा तो कल उनकी और आज उनकी और कल हमारी बारी आएगी। मैं इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम खान जी। मैं ट्रेड यूनियन लीडर मिस्टर विश्वास उत्तगे को बोलूँगा कि जरा और उसके बाद विल कीप इट ओपन फॉर। धन्यवाद। सिर्फ 5 मिनट लेता हूँ। मुद्दा ये है कि इस देश में आरएसएस स्पॉन्सर्ड बीजेपी की सरकार है और संविधान का स्वरूप जो है एक सेक्युलर स्टेट, उसको चेंज करके हिंदू राष्ट्र बनाना उनका एक मकसद है। वो उसमें कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी इस देश में सारे धर्म और जाति जो एक साथ रहते हैं उनको वो डिवाइड कर सकते हैं। यही कोशिश उन्होंने पिछले 10 साल से की है। अभी हमने त्रिपुरा में 10 साल में जो बदलाव देखे हैं वो इसी तरह से किए, जिसका नाम इन्होंने लिया निरंजन टकले जी ने। उनका नाम था सुनील देवधरे। वो पार्ला का ही आदमी है। उसका भाई आनंद देवधरे भी पार्ला का है। उसके पिताजी ये महाराष्ट्र टाइम्स के एक पत्रकार रह चुके हैं। लेकिन ये आदमी त्रिपुरा में जाके पूरा त्रिपुरा का आरएसएस बेस स्पॉन्सर्ड स्टेट बना चुका है। अब सेकेंड बार बीजेपी वहां पे चुन के आई, लेकिन वहां पे रियलाइज होने के बाद वहां की ट्राइबल कम्युनिटी उनके खिलाफ खड़ी हो गई। ये बात हमने देखी है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश हो या मणिपुर हो या असम हो या ये 7 सिस्टर्स जो है, ये यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर बहुत बड़ी संपत्ति है, जिसकी खोज पिछले 30 साल में भारत सरकार ने की है। ये एक हिडन सीक्रेट है। अब ये सीक्रेट्स अदानी जैसे लोगों को आगे बढ़ा के और नीचे से आरएसएस दुनिया में, मतलब भारत देश के इस हिस्से में एक डिवीजन पैदा करेगी और इस संपत्ति पर कब्जा करना यह उनका एक बहुत बड़ा मकसद है। वैसे देखा जाए तो ये पूरा नागा कुकी ये जो एरिया है अरुणाचल, वो पूरा जो एरिया है वो बॉर्डर इंदिरा गांधी के जमाने से सेफ हुआ। राजीव गांधी जमाने के बाद वहां पे एक बॉर्डर अकॉर्ड्स भी हो गए। नागा इंसर्जेंसी या कुकी इंसर्जेंसी, इसको मेन स्ट्रीम में लाया गया और वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप तय किए गए। लेकिन ये डेमोक्रेटिक सेटअप जैसे 370 में बंद है, वैसे 371, 372, 373 हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये 371, 72, 73 को तोड़ने की बात आरएसएस वहां पे कर रही है। इसलिए हमको मणिपुर के बारे में चिंता करने की जरूरत है। जमीन के अंदर की संपत्ति, जमीन के ऊपर की संपत्ति अपने कब्जे में करने का ये जो आरएसएस का थ्रू अदानी जो एक कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जब तक हम सब लोग इस बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता में नहीं जानेंगे। और अभी डॉक्टर सलीम खान ने जो कहा, केंद्र की सत्ता जो है वो जब तक यहां से हिलेगी नहीं, तब तक एथनिक कम्युनिटी हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, उनका खून बहते रहेगा। हम चुपचाप नहीं देख सकते हैं इस वायलेंस को, और ये ह्यूमन कार्नेज है। मैं जानता हूं कि 2002 के बाद वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी का कार्नेज हुआ अहमदाबाद में, लाल दरवाजे के अंदर मुस्लिमों के हाथ में बरसों से प्रॉपर्टीज है, बरसों से ट्रेडिंग है, वो सब उनके अपने हाथ में कब्जे करने के लिए राइट्स करवाए गए। राइट करवाना ये आरएसएस के बहुत सालों से कॉन्स्पिरेसी है, जिस कॉन्स्पिरेसी में कत्ल करना और कार्नेज करना ये एक आम बात है। वहां हमने 2002 साल में एक, आज जो प्राइम मिनिस्टर है वहां पे चीफ मिनिस्टर थे। अभी मणिपुर में चीफ मिनिस्टर तो बीजेपी का है, इसलिए इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर। जो अभी फादर ने कहा वो सच है, इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्स टेररिज्म। और वो ऐसे बॉर्डर स्टेट में हो रहा है जहां पे चाइना वॉच कर रहा है, जहां पे बर्मा वॉच कर रहा है, जहां पे दुनिया वॉच कर रही है। और हम अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल सिटी का जो वो जो ईटानगर है ना, ईटानगर के बाहर का पूरा एरिया चाइना के हाथ में है। और यहाँ का होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कहेगा और मणिपुर हाथ में से चला जाएगा। आसाम का चीफ मिनिस्टर एक दूसरा एक होम मिनिस्टर बन गया फॉर ईस्टर्न इंडिया। इस तरीके से काम हो रहा है। इसलिए पूरे भारत में इस मणिपुर का हिंसा का हम तो निषेध तो करेंगे ही, प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमको मणिपुर के जो पीड़ित है, जो विक्टिम्स है, जिनका कार्नेज हुआ है, वो ह्यूमन कार्नेज है, वो ह्यूमन जिनोसाइड है, वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप
कभी क्रिश्चियंस जू के होते थे, अभी क्रिश्चियंस मुस्लिम के, अगर मुस्लिमों के आसाम में सीए के मामले पे हो गए हैं, वहां पे भी बहुत बड़ा कंसंट्रेशन काम, जहां पे माइनॉरिटी मुस्लिम्स को हजारों की तादाद में रखा गया है ऑन द इश्यू ऑफ सीएए। उसी प्रकार मणिपुर में जो अशांति है वो आरएसएस स्पॉन्सर्ड है। इसलिए आरएसएस का जो एक पूरा डिजाइन भारत देश के बारे में है कि माइनॉरिटी के ऊपर दहशत रखो और मेजॉरिटी का वोट पकड़ के रखो, ये बात हमको बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। और 2023 में कर्नाटक में तो कांग्रेस आएगी, लेकिन सवाल यह है कि पूरे केंद्र में हमको सत्ता बदल करने के लिए, हम चाहे मुस्लिम हो, हम चाहे क्रिश्चियन हो, हम चाहे हिंदू हो, वी वांट ए गवर्नमेंट विच इज बेसिकली टू बी हैंडल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम वो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मजबूत तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे तो यहाँ के इस देश की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी और सारी एथनिक कम्युनिटी प्रोटेक्ट हो सकती है। एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी मणिपुर और उस पूरे 7 सिस्टर्स के यहाँ हम देख रहे हैं, उसको अनफोल्ड करके लोगों को बताना, और बेसिकली इसमें जो फॉरेन इंटरेस्ट है, इसमें जो इंटरनल इंटरेस्ट है, वो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है। इसलिए दहशत माइनॉरिटी पर रखो, वो एथनिक हो या रिलीजियस हो, ये बहुत बड़ा साजिश हमको डिफीट करना है। तो वोट के जरिए और प्रचार के जरिए हमको आरएसएस को डिफीट करना है, हमको बीजेपी को डिफीट करना है। अब तब हम जानेंगे कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, ये क्रिमिनल कैपिटलिज्म इज इन ऑपरेशन है। इसलिए अदानी और मोदी ये दोनों नहीं है, एक ही है। हम ये जानेंगे तो बेहतर होगा। लोगों में ये समझाने की कोशिश करें। मणिपुर के साथ हम सारी देश की जनता अच्छी तरह से खड़े होना ये आज के वक्त बहुत जरूरी है। और इसके लिए बंबई शहर में हम वी वांट पीस इन मणिपुर करके एक बहुत बड़ा कम्युनल हार्मनी का एक, अगर हम भारत जोड़ो जैसा आंदोलन जैसे हुआ, वैसे बंबई में और महाराष्ट्र में अगर हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वैसे यूनाइटेड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा लेके हम बंबई में और महाराष्ट्र में जगह जगह पर हम सब लोग साथ में आके ये प्रोटेस्ट करें तो बेहतर होगा। मैं फिर से धन्यवाद करता हूं ऑर्गेनाइजर का। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट वक्त लिया है। कर्नाटक कल पता चलेगा, वहां पे बदलाव होगा ही होगा। महाराष्ट्र में भी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती की है, उसको भी हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ लोगों को रास्ते पे उतरने की बात हम करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो बीइंग मैन्यूवर्ड एंड मैनिपुलेटेड। जस्टिस इस तरीके से अगर दबाने की कोशिश ऊपर से और बाहर से होती है तो इसको बर्दाश्त करने वाले हम लोग, अगर हम काम नहीं करेंगे रास्ते पे आके तो हम निकम्मे होंगे। हम नहीं चाहते कि हम निकम्मे होंगे, हम चाहते कि इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके ये एक सेक्युलर स्टेट रहे, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ख्रीस ईसाई सब लोग साथ में मिलकर रहेंगे। ये आज का मेरा 5 मिनट का भाषण था। धन्यवाद। अभी वी आर कीपिंग इट ओपन फॉर क्वेश्चंस। पहले हमारे बीच में मीडिया के लोग भी है और हमारे बीच में एक्टिविस्ट भी है, तो पहले मैं गुजारिश करूंगा कि मीडिया के लोग, आपको कोई प्रश्न है पैनल से स्पेसिफिक से, आप आपका परिचय पहले दीजिए और फिर आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। मणिपूरमध्ये आत्तापर्यंत जेवढे रिपोर्ट्स आले आणि तिथल्या पत्रकारांशी सुद्धा मी बोललो, तर चर्चेस क्लिअर कट जाळलेली आहेत। चर्चेस ख्रिश्चनांची असतात, अजून हिंदूंनी चर्च बांधली नाहीत, त्यामुळे हिंदू कशामध्ये नाही आता या इतक्या आत्तापर्यंत जेवढे हिंसाचाराचे मुद्दे सांगितले हे कुठेच मेन स्ट्रीममध्ये नाही आहे। याचं हे जे याच्या पाठीमागचं जे षडयंत्र आहे, मैतेईंना कशा पद्धतीने प्रोव्होक करायचं आणि कशा पद्धतीने शेड्यूल ट्राईबमध्ये राज्य सरकार शिफारस करू शकतं का? हे कॉन्स्टिट्यूशनमधलं शेड्यूल बनलेलं आहे ना, 2 शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशननी बनवली, पण हे प्रोव्होक करण्यासाठी, इन्स्टिगेट करण्यासाठी काय काय बॅकग्राऊंड आहे हे अजूनपर्यंत प्रसारमाध्यमात आलं नाही। मंदिर जळते ही बातमी आली हे तुम्हीच सांगताय, कोणी
हो ना, मग ती तुम्हालाही माहिती आहे ना. तुम्हाला जे नाही माहिती ते सांगण्यासाठी पत्रकार परिषद आहे. See, sorry, we do not see we do not distinguish between Hindus and Muslims and Christians and Kukis and Nagas and Meiteis. Sometimes in order to understand the conflict, we have to lift this veil of identities and call spade a spade. But anybody injured or any victim of violence, whatever religion they are belonging to or whatever ethnic identity they belong to, we condemn it. We condemn violence. Next. कोई मीडिया में से कोई पूछना चाहते हैं, नहीं तो फिर ओपन करेंगे. बाकी किसको पूछना है सवाल? ओके, थैंक यू. मीडिया से जरा पहले पूछ लीजिए. ओके, थैंक यू. शुक्रिया अदा करो. आपसे पूछना था ना एक सवाल. हाँ, आपका परिचय दे दीजिए और पूछे सवाल, तो फिर कंक्लूड करेंगे. योर नेम सर? आपका नाम बताइए. ओके. What you please sit down. What you call infiltration is actually free flow of ethnic that particular tribe for generations. Those tribes have never recognized their those borders. They come and go. They come for marketing. At times there are matrimonial relations. This is being used, certain people are being termed as, there is hatred being spread against them by calling them as foreigners, illegal migrants or drug traffickers. Actually, it's all, that they grow poppy in the forest areas. This is as good as saying all Muslims are terrorists, or all terrorists are Muslims, or all Muslims have 4 wives, or all Christians convert. We have many such post-truth facts. You judge. But why a particular community is being targeted with this kind of things, that you speak, even if one non-Christian worship, place of worship is attacked, you talk only of that. So, that's my response to. Thank you. Last, we take the last question. Sir, my name is Sanil Sehgal, the Right Media newspaper. Sir, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मणिपुर में हादसा हुआ है, ऐसा दोबारा कोई हादसा देश में ना हो, उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से आंदोलन करना चाहिए? You would like to respond? अच्छा, मराठीत बोलायचं तर मला वाटतं की इंटेलिजन्स आहे प्रत्येक सरकारला, कारण तो एक भाग आहे सरकारचा भाग, इंटेलिजन्स गॅदरिंग करायला. आणि काय होणार आहे सरकारला माहीत आहे आणि त्याच्या विरुद्ध काही उपाय केलंच पाहिजेत त्यांच्याकडून. पण असं होत नाही, म्हणून संशय आहे की हे मुद्दाम ही जी घटना मुद्दाम होत आहे सरकारच्या संमतीने. मग टाळण्यासाठी खूपच सोपं पर्याय आहे सरकारकडे, कारण आता 3-4 दिवसाच्या हिंसानंतर ताबडतोब त्यांनी ताब्यात आणलं. म्हणून मला वाटतं सरकारचं जी जबाबदारी आहे
ती जबाबदारी न घेता ते हिंसा चालवायला परवानगी देतात, हे आपण आता त्याच्या विरुद्ध बोलायला पाहिजे. We would like to thank the members of the panel as well, also members of the media and our other activist friends for attending this particular seminar and press conference, and await further announcements in terms of campaigns that we intend to launch in the city of Mumbai. Please support, please pass the message around, don't be silent, take a stand. Thank you. सलीम भाई आइए, ऊपर आइए. सलीम साहब Yours is very small.